Hello students, I hope you all are well and safe at your home. So let's begin with today's session. This session is for 3rd class subject SST chapter 2 Food and Dresses of India from your second term book. Lecture number 3 and topic will be summary and book exercise. Let's revise once again chapter 2 Food and Dress of India. Yes, my dear students, if we talk about फूड तो हम सबसे पहले जानते हैं फूड किसे कहते हैं। फूड जो हम खाते हैं उसी को कहते हैं। नाउ क्वेश्चन इज फॉर्म्ड इन द माइंड दैट व्हाई डू वी ईट फूड। हम फूड किस लिए खाते हैं? यस, हम फूड खाते हैं जिंदा रहने के लिए और अपने शरीर के विकास के लिए। फूड to live and grow. For energy, and for good health. From where we get food? Yes, we get food from plants, animals. We get food from plants and animals. See, barley, oats, maize, rice, wheat, milk, all these are plants products. Meat, eggs, chicken, fish, milk and milk product. All these are animals product. All these are animals product and these are plants product. भारत में जो लोग प्लांट्स प्रोडक्ट एंड मिल्क प्रोडक्ट से बनी हुई चीज़ें खाते हैं उसको वेजिटेरियन कहते हैं। एंड पीपल हु ईट एनिमल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। सोचो जरा, क्या इंडिया में हर जगह एक ही तरह का खाना खाया जाता है? नो। If we talk about West Bengal,
उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, तो हम पाएंगे यहाँ के लोग ज़्यादातर चावल या चावल से बनी हुई चीज़ें खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल डोसा, idli and vada. And if we talk about North Indian people, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, तो यहाँ पर क्या है, ज़्यादातर लोग, उत्तर भारत के लोग गेहूँ और गेहूँ के आटे से बनी हुई चीज़ें खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल रोटी, पराठास, पूरी एंड ब्रेड. Yes, my dear students, listen carefully. In the eastern part, people prefer eat fish areas. In south, people eat idlis, dosa, etc. Means पूर्वी हिस्से में लोग चावल और मछली खाना पसंद करते हैं. दक्षिण के में लोग इडली डोसा खाते हैं. थिंक वेयर इज द मोस्ट कॉफी ग्रोन इन इंडिया. यस माय डियर स्टूडेंट्स, भारत में कॉफ़ी का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिण भाग के पहाड़ी क्षेत्रों में होता है. एंड वेयर इज द मोस्ट एप्पल ग्रोन इन इंडिया? यस, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश. एंड व्हाट अबाउट मैंगोज? Yes, my dear students, mangoes from Uttar Pradesh. Yes, oranges from Nagpur. Next topic is types of food. I have already told you 3 types of food. One, body, yes, building, body building food. Next is energy, giving food. Third, protective food. Apart from these, I have taught you about types of food. Have you remembered? Okay, listen. We have discussed about 2 types of fruits. First, seasonal fruits. Second,
perennial fruits. Mango, oranges, pear, grapes, etc. All these are seasonal fruits, and perennial fruit is banana. Let us discuss about clothes. Clothes. We wear clothes for two reasons. First, clothes protect us. From heat and cold. Second, we need to cover our bodies in a civilized society. मीन्स हम दो कारणों से कपड़े पहनते हैं। सबसे पहले कपड़े हमें गर्मी और ठंड से बचाते हैं। दूसरा, हमें शरीर को ढकने की ज़रूरत होती है। एज यू नो, from different reasons, have different traditions, people can be recognized by their dresses. For example, the people shown here are Punjabis. They live in Punjab. And dresses, women wear salwar, kameez and dupatta. Next picture is Kashmiri dress. So you can easily understand what the people in Kashmir wear. आप इस तस्वीर को देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि कश्मीर में कश्मीरी लोग क्या पहनते हैं। Next picture is Haryanvi dress. These people are Haryanvi, people of Haryana. The men wear a kurta, dhoti and turban. Women wear a ghagra, kurti and odhni. If we talk about Rajasthan, here is the picture of Rajasthani dress. As you have already come to know that just like every state's food is different, similarly their dresses is also different. जैसा कि आप अब जान गए होंगे कि हर स्टेट को जैसे खाना अलग है, वैसे ही उनका पहनावा भी अलग है। People can be recognized by their dresses, but modern Indian dresses have been influenced by the Western culture. Your chapter has completed.
but we repeat it once again by quick scroll. Yes, in your book, quick scroll, page number 15. So listen carefully. First point is grains, vegetables, fruits and spices make our food. Means अनाज, सब्जियां, फल, मसाले हमारे खाने को और भी स्वादिष्ट बनाते हैं. Second, a good system of transport helps in the movement of food articles from one part of the country to another. अगर यातायात के साधन अच्छे होंगे तो हम खाने के सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचा सकते हैं. थर्ड पॉइंट, वी नीड क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द हीट एंड कोल्ड एंड टू लिव अ सिविलाइज्ड लाइफ. मीन्स हमें गर्मी और ठंड से बचाने के लिए और सभ्य जीवन जीने के लिए कपड़ों की आवश्यकता होती है. नेक्स्ट, क्लाइमेट, ट्रेडिशंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल फॉर क्लोथ्स डिटरमाइन आवर ड्रेसेस. जहाँ हम रहते हैं वहाँ की जलवायु, परंपरा और जो हमें कपड़े आसानी से मिल जाएं वहाँ पर हमें वह कपड़े वहाँ के अनुसार निश्चित करने चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ पर ज़्यादा सर्दी पड़ती है वहाँ पर हम ऊनी कपड़े पहनने चाहिए हमें. लास्ट पॉइंट, people can be recognized by their dresses, but modern Indian dresses have been influenced by the Western culture. लोगों को उनके पहनावे से पहचाना जा सकता है, लेकिन आधुनिक भारत मीन्स अब जो टाइम है परिधान पश्चिम संस्कृति से प्रभावित है. We could easily identify by looking at the clothes for earlier people, which state they are belong, but it is not an easy task. Now it's time for book exercise. So open your book, page number 16. B. Fill in the blanks. It is your yesterday's homework. ये आपका कल का होमवर्क था. Dash and dash are the main items of food in the coastal areas of eastern India. The right answer is rice and eggs. Sorry beta, egg and not egg. You can write here fish. Rice and fish are the main items of food in the coastal areas of eastern India. Second, rice, potatoes and sugar are energy giving food. Third, dash is known for its superior quality oranges. So right answer is Nagpur. Nagpur is known for its superior quality oranges. Next, lungi is worn in Tamil Nadu and Kerala. So write down here. Kerala. Fifth number, dash women wear ghagra. The right answer is Haryana. Haryana women wear ghagra.
Let's read once again. Rice and fish are the main items of food in the coastal area of eastern India. Second, rice, potatoes, and sugar are energy giving food. Nagpur is known for its superior quality oranges. Lungi is worn in Tamil Nadu. Worn means pehenna. Tamil Nadu and Kerala. Next, Haryana women wear ghagra. C part in your book, write true T or false F against each statement. हर statement के बाद में आपको यहाँ पे true है तो T, false है तो F लिखना है. So first is wheat is grown and eaten in South India. First you must recall your chapter, then you must mark T or F. Second, idli and dosa are made of wheat. No dear, idli and dosa are made of rice. So second number is false. You must write F. Third number, vegetarian people don't drink milk. ऐसा कुछ नहीं है कि शाकाहारी दूध नहीं पी सकते हैं. The right sentence is vegetarian people can drink milk. So write down F. Fourth number, a turban is essential for 6. Yes, it is right sentence. So write down here T. Next, Goan dresses are influenced by Portuguese culture. Yes, because Goa was under the Portuguese for a long time. What should you write? Yes, T. Now, write down your homework, today's homework. D. Match the column A and B. Column A, number 1 oranges, 2 West Bengal, 3 tribal people, 4 mustard, 5 colors. And here in column B, number 1 spice, second traditional colorful dresses, third Nagpur, fourth dhoti kurta, fifth oil seed. Yes, tribal means tribal people, आदिवासी लोग. ट्रबन पगड़ी बताई थी. मस्टर्ड सरसों. क्लव लौंग, जो मसाले होते हैं लौंग. You must do your homework yourself. If you are unable to do so for any reason, then you should read the chapter again, or you can listen to the lecture again. Subscribe this channel if you like my video that this lecture. Goodbye. Thank you.